Today we will learn about the intersection and union of sets. There are two sets A and B. There is a universal set 1, 2, 3, 4, 5, and 6. There is a set A, set of prime numbers. And there is a set B, set of even numbers. What is the meaning of intersection? Sir, intersection means like making into different parts. Beta ji, intersection means lying in both the sets. Is there any element which belongs to both the sets? Two. 2. So the intersection is 2. अब ये देखिए कि consider the lines. Are these two lines intersecting? Yes. And this one is the point of intersection. Yes. Point of intersection is common to both the lines. Okay? Yes. Intersection means common. Common. And the sign used to represent intersection is like this. A intersection B. And this set is equal to 2. Intersection means common. And the sign used is like this. This one is the intersection sign. Now what is union? A, this one is the sign for the union, that is like U. A union B, we will unite the two sets. We will unite the two sets. Sets. 2, 3, 5. We will combine the two sets. Now we will write down the elements of B. Can we write 2 again? No. No. Because the definition of the set is there should be no repetition of the elements. The elements should be distinct. The elements should be well defined. So this one is the union of the two sets. And this one is the sign used to represent union. Now we will use the concept of Venn diagram to explain the union and the intersection. We will represent the universal set with the help of a Rectangle. this one is the universal set. Now, is there anything common between the two sets? Number 2. Yes, 2. So we will draw the overlapping circles.
like this. This one is set A, this one is set B. First of all, we will fill the intersection portion. This one is 2. Now we will write down the elements of A. 2 is already written in A, so we will write only 3 and 5. In B, there are 3 elements and one element is already written in the intersection portion. We will write 4 and 6. Now, there are 6 elements in the universal set. 5 elements are already written. We will write down 1 outside the 2 circles. This one is the Venn diagram. Now we will indicate the intersection portion and the union portion in this Venn diagram. Now, which portion is common to both the circles, both the sets? 2. So we will shade this region. This one is the region. Shaded with the red is the intersection portion. So this portion is known as A intersection B. When we will combine both the circles, तो वो रीजन क्या कहलाएगा? When we will unite both the circles, वो रीजन क्या कहलाएगा बेटा जी? यूनियन कहलाएगा. बिल्कुल सही है, यूनियन कहलाएगा. और मैं इसको ग्रीन कलर से यूनियन को शेड कर रहा हूं. This one is a portion which is A union B. ठीक है? Now I will elaborate this concept with the help of another example. The universal set is one, two, three, four, five, six. A is a set of even numbers and B is the set of odd numbers. Can you see common element in both the sets? Odd numbers में 2 नहीं आएगा. 1, 3 and 5. G. Is there any common element between the two sets? No. When we will draw that A, first of all, we will find out A intersection B. Is phi, is the empty set. Now we will find out union. We will write down the elements of first set. Now we will write down the second. Yes, write down the elements of second set. And if there is anything common, we will not write that element. समझ आ गई? जिस तरह पीछे 2 था तो 2 को हमने नहीं लिखा था क्योंकि वो रिपीट कर जाता है. और सेट के अंदर जो है एलिमेंट्स जो है वो शुड बी वेल डिफाइंड. 1, 3, 5 ये A यूनियन B आ गया. नाउ वी विल शो दिस. जी जी. So in this Venn diagram, we will not overlap the. Very good. Circles.
Because there is no element common, In so we common. will not draw the overlapping sets. We will draw the disjoint sets. We will draw the disjoint sets. Disjoint. And there is no element outside the two circles. Now, shading in Venn diagrams. This one is the Venn diagram. This one is set A, this one is set B, this one is a universal set. We want to shade the region which represents A intersection B. अच्छा बेटा, इसको हमने करना किस तरह है? इसका हमने एक जिसे कहते हैं कि मेथड को अडॉप्ट करना है. तो उस मेथड को अडॉप्ट करने से हमारे पास वो रीजन खुद ब खुद आ जाएगा. अब किस तरह करना है वो मेथड अडॉप्ट? आप ये देखें कि यू कैन सी दैट टू सेट्स आर गिवन ए एंड बी. आपने दो डायग्राम्स बना लेनी है इस तरह की. सर आपकी वॉइस डिस्टॉर्ट हो रही थी. जी बेटा, बेटा मैं ये कह रहा हूं कि आपने क्या करना है कि दो सेट्स दिए हुए हैं यहाँ पर, आपने इस तरह की दो वेन डायग्राम्स बना लेनी है. अब द सेट्स गिवन आर ए एंड बी. आपने एक सेट के अंदर ए को शेड कर देना है और दूसरे सेट के अंदर आपने बी को शेड कर देना है. अब कैन यू आइडेंटिफाई द region shaded in both the diagrams? The middle one. The middle one, the overlapping portion. ठीक है? Yes. तो this one is the Intersection. intersection portion and this one is the region A intersection B. अब ये देखें कि now we want to shade the region A intersection B dash, B complement. A intersection, you can see that two sets are given. Yes. We will draw two diagrams. Now, in the first set, we will shade the set A. Now, in the second diagram, we will shade the set which is not in B.
which is not in B. We will shade all the portion which is not in B. We will shade all the portion other than B. So then how will we find the intersection? Okay. Now look at the two diagrams. Which portion is commonly shaded in both the diagrams? Crescent, the part A that except for the intersection, Yes. rest This one is the unshaded. answer. Yes, yes. Left of A. This one is a portion A intersection B dash, which is in A but not in B. Okay, is there any confusion? No, sir. Now the next task is to X dash intersection Y dash. There are two circles, there are two sets X dash and Y dash. We will draw two diagrams. In the first diagram, we will shade the region X dash. That is the region which is not in X other than X. The region except for X intersection, like Y portion and the rest the union, the universal set. This one is X dash, X complement. Now we will draw Y complement. That is the portion which is not in Y. This one is the portion not in Y. Now, which portion is common to both the diagrams? Universal set. The whole The universal set. remaining numbers that are being written outside. Outside the two circles is the common Yes. portion to both the diagrams. Yes. So this one is the required portion, which is X dash intersection Y dash. Now,
We want to find out x dash union y dash. The two separate diagrams are already drawn. That is x dash and y dash. These are the two separate diagrams. Now we will unite both the portions in the single set, that is in this one. Now which portion we will shade? We will unite both the portions in this diagram. Sir, we will leave. Um, we will shade the whole diagram. The whole diagram. Okay. Yes. Um, Except for the intersection. yes, except for intersection. That's the right answer. Now for this one, we will shade the one region, first region. हम पहले region को shade कर देते हैं, that is x dash. ये जी x dash को shade कर दिए. अब इसी में हम y dash को shade कर देते हैं. जब y dash को हम shade करेंगे तो y के अलावा सारे portion को shade करेंगे. This portion is already also shaded. The only portion we are left with the intersection portion. तो बाकी सारा जो region which is shaded is x dash union y dash. The shaded portion is x dash union y dash. So what is the method to shade the, what are the steps, what is the method to shade the required region in the Venn diagram? Can you please Sir, explain? sir, first we have to um we have to find out with each um like each set will be shaded according to its requirements in Yes, two separate we diagrams. will, yes. We will draw separate diagrams for each set. Okay. And we will shade the regions in the separate diagrams for x dash, say for x dash and y dash. And then we will think that which portion is common or which is the union of the two portions. Separate diagrams बनाना जो है ये बेटा जी आपका, अगर सेपरेट डायग्राम्स बना लेंगे तो आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा. ठीक है बेटा जी. आवाज नहीं आ रही आपकी. ठीक है सर. सर मैं कर लूंगी सेपरेट जी डायग्राम सही कर लूंगी. जी ठीक है. इसके अलावा भी आपके पास कोई मेथड है जो आपको पता है विच इज मोर, जिसे कहते हैं इजी एंड कन्वीनियंट, आपके जहन के अंदर है तो मुझे बता दें. आपने पहले ये चैप्टर किया हुआ है? नहीं सर. ठीक है. मैं ये कह रहा था कि अगर आपके जहन में कोई आइडिया है कि जो ज्यादा सिंपल हो और ज्यादा क्विक हो तो आप मुझे बता सकती हैं, हम उसको अडॉप्ट कर लेंगे. सर मुझे लग रहा था लाइक मेकिंग टू डिफरेंट डायग्राम्स वुड बी डिफिकल्ट, लेकिन अगर आप उसको डिफरेंट कलर से एक ही डायग्राम में कर लेते ना तो वो वो भी ज्यादा सही, सही. वो भी ठीक है, लेकिन बात ये है कि डिफरेंट कलर से जब एक ही डायग्राम में आप करेंगे तो फिर यू विल हैव टू ड्रॉ एन अदर डायग्राम के इंटरसेक्शन पोर्शन कौन सा है. ये भी आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इन द सेम डायग्राम ये इसी क्वेश्चन को हम करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश को करते हैं जैसे आपने कहा है. These are the two sets, A and B. This one is the universal set.
First of all, we will shade A. This one is A. Now we will shade B dash. For this method, you should have two different color pencils. And you are right that this method is more quick and easy. Which portion is common to both the जो Sir, है वो left the portion of A? rest of A. That's it's more easy. This one is the required portion. Yes. And if you want to find out the union, then this one is the union. Yes. आपने दोनों पोर्शंस को यूनाइट कर दिया है. ये जो सारा शेड हुआ हुआ है, ये दिस वन इज द यूनियन A union B dash. Okay. Now we Okay, will sir. move to the exercise. अब ये देखें बेटा जी, दरअसल बात ये है कि जब आप 11th C में मूव करेंगे ना, तो वहां पर 3 3 4 4 सेट्स बने होंगे. वहां पर आपने जो है वो उसको फिर शेडिंग करनी होगी. वहां पर सम टाइम ना, जो एक ही डायग्राम के ऊपर 4 सेट्स की शेडिंग जब होती है तो उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि आप कॉमन पोर्शन को आइडेंटिफाई करें. ये मेथड भी ठीक है, लेकिन जो है आप दोनों मेथड्स को अपने जहन में रखें. जहां पर आपको लगेगा कि विच वन इज इजी, वो वाला अप्लाई कर लेंगे हम. Okay, sir. अब वो कहते हैं कि इट इज गिवन दैट द यूनिवर्सल सेट is the letter of English alphabets. Draw the Venn diagram to illustrate the following sets. Find A intersection B. A और B दिए हुए हैं. Question number 1, A part. The set A is given. A, B, C, D, A, B, C, E, F. A, B, C, E, F. The set B B, is B, C. B, C, O, B, Q. Now we want to represent the two sets with the help of a Venn diagram, and we want to find out the intersection of A intersection B. Intersections is Is C. there anything common? C. Yes, we can see that. So we will draw the overlapping sets. A, B, universal. Now common element is B and C. Yes. Now we will have to write 3 more elements in A and 3 more elements in now A Sir, in is A intersection, you have written C. It is supposed to be A. yes, you are right. A. A, B, C, D, E and F are written. G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q are already written. R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
Now this one is the Venn diagram representing the two sets. Sir, Now, and then we can highlight the intersection. जी बेटे, Now we can highlight the intersection. Yes. we can highlight the intersection section portion, and the in the intersection portion the elements are B and C. So the requirement is to find out A intersection B, and this one is the A intersection B. Now question number 8 is find the union and the intersection of each of the following sets. It's very easy. Question number 8, D part. G is equal to A, M, K, and Y. H is equal to empty set. Y. Now G intersection H. G intersection H के में कोई common element बताएं. So this one is 5. There is nothing common between G and H. G union H. We will write down the elements of the first set along with the second set, avoiding the repetition. So there is no element in H. So this one is G union H. Now you are supposed to attempt the questions of this exercise. और 5-5 करके आप भेजें. इसमें जो प्रॉब्लम्स होंगी वो हम उनको डिस्कस कर लेंगे. We will attempt question number 21 from exercise 14C. For any set A, simplify the following if possible. Part 1 is A intersection universal set. As you know that we represent universal set with the help of a rectangle, and this one is set A inside the universal set. Now we want to find out the intersection of universal set and A. Now you can see that there are two sets under discussion. One is A, other one is E. Now we will draw two diagrams, and in one diagram we will shade the universal set. आवाज आ रही है बेटा? Can you hear me? Yes, sir. ये बेटा जी हमने यूनिवर्सल सेट को शेड कर दिया है. इन द अदर डायग्राम वी विल शेड द सेट A. Which portion is common in both the which portion is commonly shaded in both the diagrams? Sorry, Sir, set A. set A. So A intersection universal set is equal to जी बेटा A intersection E is equal to which set is shaded in the final diagram A.
जी है बेटा जी. Now we will attempt second part. In the second part, we want to find out A union universal set. Now A and the universal set are shaded in the above diagram. Now what is the answer when we will unite these two areas? Sir, um, universal set. Yes. Is there any confusion? Beta ji, is there any confusion? No, sir. This one is the answer. Now we want to find out A intersection phi. अब ये देखें कि I will explain this A intersection phi. A is A intersection phi. There is a sac in which there are mangoes. And there is a empty sac. What is common in the two sets? Sack. Sorry, Empty sack. empty. Sack. Oh, empty only. Empty. So this one is the answer. And when we will unite these two sets, what's the answer? जी बेटा जी, when we will unite these two sets, जी अनाया बेटा, जब हम इन सेट्स को यूनाइट करेंगे तो फिर क्या आंसर आएगा? Sir, set A. Yes. Now, we will attempt question number 22. A is a subset of B. A is contained in B. A is contained in B. This one is A. This one is B. Is this diagram correct according to the given information? A is a subset of B. Anaya beta, is this diagram connect with the mm, correct with the given information that A is a subset of B? Yes. We will draw A inside the B. Now, it is given that A intersection C is equal to phi. There is no overlapping between A and C, but but C may overlap B. This one is the diagram. No overlapping of A and C. B के मतलब तो there is no condition is given about B and C, so we can overlap B and C. Yeah. ये हो गया बेटा जी.
अब वो कहता है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी, लुक एट दिस डायग्राम, व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी। बेटा आप दो जगह से वो है हुई हुई है लॉगिन। हेलो। जी सर, अब ठीक है। हाँ जी ठीक है बेटा। बेटा ए इंटरसेक्शन बी जो है वो किसके इक्वल होगा, इस डायग्राम को देखें और बताएं कि ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा। सर सेट ए। बिल्कुल सही है बेटा, ए के इक्वल होगा। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप ए और बी को सेपरेट डायग्राम्स में शेड द सेट ए एंड द सेट बी इन सेपरेट डायग्राम्स, और उसके बाद यू कैन डिसाइड दैट विच पोर्शन इज कॉमन टू बोथ, और आपके पास आंसर आ सकता है। ये फर्स्ट पार्ट था जी इसका। सर। अब सेकंड पार्ट में ए ओके यूनियन बी। सर, बी। यस। बी इंटरसेक्शन सी। उसने कहा सर, है कि इफ पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। हाँ जी, इसको छोड़ देते हैं हम। अब ये इसका नॉट पॉसिबल। मैं करता हूँ एट्थ पार्ट करता हूँ। ओके। ए इंटरसेक्शन सी यूनियन union बी। B. Now, what is A intersection C? First of all, we will solve this A intersection C. What is A intersection C? Look at the diagram. फाइव। Yes, phi. And phi union B is equal to, फाइव। look at this example. This one is a sac containing B, and this one is an empty sac. What's the union of these two? When we will unite these two sacs, what should be the final answer? बी। बी। B. सेट बी। Shabash. 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 ठीक है. Now we will attempt question number 23. It is given that universal set is equal to quadrilaterals. What is a quadrilateral? सर, फोर साइडेड शेप्स। rhombus, Yes. square, rectangle, Yes. Parallelogram. trapezium. All four-sided figures. A is the set with all four sides equal. G. Square इसमें कौन कौन सी स्क्वायर, and rhombus. रोम्बस। रोम्बस रोम्बस जब हम कह देंगे तो स्क्वायर खुद ब खुद ही बीच में आ जाएगा। एंड बी इज द सर, सेट। स्क्वायर नहीं लिखेंगे? नहीं, रोम्बस जब हमने कह दिया ना तो रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती हैं बेटा। रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। जब रोम्बस के अंदर सारी साइड्स इक्वल होंगी मेरे बेटे,
तो उसके अंदर 90 एंगल्स वाले भी आ जाएंगे और नॉट 90 वाले भी आ जाएंगे। देखें, ये आपकी बात बिल्कुल जी ठीक है, सर। ये फोर साइड्स इक्वल है, इसमें भी फोर साइड्स इक्वल है। जी सर। तो क्या है कि रोम्बस के अंदर ये भी आ जाएगा, स्क्वायर भी आ जाएगा, और 90 के एंगल्स वाले भी आ जाएंगे और नॉट 90 वाले भी आ जाएंगे। तो अगर हम सिंपल रोम्बस कह देते हैं तो रोम्बस के अंदर जो है वो 90 एंगल्स वाले भी आते हैं और नॉट 90 वाले भी आते हैं, तो सिर्फ रोम्बस हम कहेंगे, स्क्वायर नहीं कहेंगे। ओके। अब बी है जी, बी के अंदर कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ क्वाड्रिलेटरल विद ऑल इक्वल एंगल्स। सर रेक्टेंगल, रोम्बस, ऑल इक्वल एंगल्स, पैरेललोग्राम। नो नो नो, ऑल इक्वल एंगल्स। अब मैं इसको डिस्कस करता हूँ बेटा। ऑल इक्वल एंगल्स, ऑल इक्वल एंगल्स अगर होंगे तो क्या हो सकता है, टोटल रोम्बस के जो टोटल एंगल्स का सम है वो 360 होता है। रोम्बस के टोटल एंगल्स का सम जी सर। 360 होता है। जी सर। सॉरी, क्वाड्रिलेटरल के। 360/4 क्या है, 90 डिग्री। तो क्योंकि सारे एंगल्स इक्वल हैं इसलिए हमने 360 को 4 से डिवाइड किया, हमारे पास 90 आ गया। यानी कि हमारे पास इस वक्त जो क्वाड्रिलेटरल है, इस वक्त जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है उसके सारे एंगल्स इक्वल है। तो सारे एंगल्स इक्वल किस केस में होते हैं, क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल्स इक्वल हैं, सारे एंगल 90 90 90 हैं। तो आपकी बात ठीक है, ये स्क्वायर भी हो सकती है। रेक्टेंगल भी हो सकती है। जी, और बस मैं यही शेप सोच सकता। जी, और हो सकती है कोई। सर पैरेललोग्राम। बेटा पैरेललोग्राम तो फिर इस शेप, ये शेप हो जाती है ना पैरेललोग्राम की तो। और नहीं नहीं सर, पैरेललोग्राम नहीं आता। रोम्बस। नहीं, रोम्बस भी नहीं हो सकती, क्योंकि रोम्बस में तो एंगल 90 का भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, सारी साइड्स इक्वल है। देखें रोम्बस की तो, ओके सर। रोम्बस की शेप तो बेटा इस तरह की होती है ना, चार साइड्स इक्वल होती हैं रोम्बस में। ये चारों साइडें इक्वल है। अब इसमें हमने साइड्स इक्वल रखनी है, हम एंगल्स भी इक्वल रख सकते हैं। ये ले, तो एक तो हो गया रेक्टेंगल और एक हो गया स्क्वायर हो गया। ठीक है जी। अब वो जी कहता सर। है कि आगे पढ़ते हैं हम क्वेश्चन को। कहता है क्यू इज अ रेक्टेंगल विद लेंथ 12 एंड ब्रेड्थ 10। ठीक है, रेक्टेंगल है, लेंथ 10 है, लेंथ 12 है और ब्रेड्थ 10 है। आर इज अ रोम्बस विद साइड 7 एंड एंगल 30 150 30 150। ठीक है, एस इज अ स्क्वायर विद साइड 8। ठीक है, एस इज अ स्क्वायर विद साइड 8। T is a trapezium with sides 5, 5, 5, and 9. On the diagram below, write down Q, R, S, and T in the appropriate subsets. अब बेटा जी
अच्छा बेटा जी, देखेंगे जो सेट क्यू है, सेट क्यू जो है वो कह रहा है कि इज अ रेक्टेंगल। अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें तो ए और बी सेट में रेक्टेंगल किस में लिखा हुआ है? बी सेट में। तो क्यू जो है वो सेट बी में आएगा। उसके बाद है आर इज अ रोम्बस विद साइड 7 सेंटीमीटर्स एंड एंगल 3150 3150। तो जो सेट आर है वो सिर्फ ए में आएगा। अब वो कहता है एस इज अ स्क्वायर विद साइड 8। अब एस क्या है? जब हम रोम्बस कह देते हैं ना बेटा, रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल, तो रोम्बस के अंदर दो डायग्राम्स आ जाती हैं, स्क्वायर भी आ जाता है और दूसरी वो सारी डायग्राम्स जिसमें एंगल 90 के नहीं है। ये देखें, ये एंगल 90 के नहीं है लेकिन साइड सारी इक्वल है। रोम्बस की क्या डेफिनेशन होती है? ऑल द साइड्स आर इक्वल। और वो स्क्वायर में भी होते हैं और जिसमें एंगल्स अगर 90 डिग्री ना हो तो उसमें भी होते हैं। तो जब हमने रोम्बस कह दिया है तो स्क्वायर ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ गया, और अब सेट बीम के अंदर भी स्क्वायर मौजूद है। सो वी विल राइट डाउन एस इन द इंटरसेक्शन। टी इज अ ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम डजंट बिलोंग टू द सेट ए, is not a rhombus, and T does not belong to the set B because trapezium is not a square or a rectangle. So we will write down T outside the two circles. This one is the answer to this question. Thank you very much.